Assalamu alaikum. This is a very small video on how to solve and structure an 8-mark question. The question is discuss whether or not demand for coffee is likely to rise in the future. So you can see that the question word starts with the word discuss. It can also start with the word evaluate. So if the command word is discuss or evaluate, you know that you have to write an essay where you have to present an argument. uh, you'll have to present two sides, and the two sides over here are whether side A, the demand for coffee will rise in the future, will increase in the future, and the second part is that the demand for coffee may fall in the future. So when you structure your answer also, please note that your answer is going to be divided mainly into two parts. This is going to be side A, where you're going to talk about whether the demand for coffee will increase in the future. And here you're going to talk about in part B, whether the demand for coffee will fall in the future. And for both sides, you will give 2 points each. So let's begin our answer. As globalization increases, so what I've done is I have quoted event, which is globalization. I have not explained what globalization is. I have not given a definition. Globalization is an increase in movement of people, ideas, goods, and services across countries. So as globalization increases, more people may travel abroad. I have given the effect of this. So an 8-mark question is divided mainly in terms of marking. It is divided into two parts: 4 marks for analysis and 4 marks for evaluation. 4 marks एनालिसिस के हैं, कॉज एंड इफेक्ट के, और 4 मार्क्स एवेल्युएशन के हैं, यानी कि दूसरी साइड को एक्सप्लेन करने के. सो आपने एक साइड को लिया, एज ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस यू हैव गिवन वन रीजन एंड देन दिस इज द कॉज एंड हियर यू आर representing an effect. More people may travel abroad and explore new cultures. इससे क्या होगा? They may be exposed to coffee on their trips to the Western world. Now you are giving an assumption. They may be exposed. You are giving an assumption. Please remember, whenever you're analyzing something, give an assumption. हो सकता है वो travel करने के बाद ऐसी country में जाए जहाँ पे लोग कहवा पीते हैं, coffee नहीं पीते. So आपने ये assume किया है कि वो Western world जा रहा है. राइट और उससे क्या होगा, फर्दर इफेक्ट क्या होगा, एंड देयर प्रेफरेंस फॉर कॉफी में इंक्रीज. सो हमने पहला रीजन क्या बताया कि ग्लोबलाइजेशन से पीपल विल ट्रैवल, ग्लोबलाइजेशन से पीपल विल ट्रैवल एंड दे विल ट्रैवल टू वेस्टर्न वर्ल्ड. और वेस्टर्न वर्ल्ड से क्या होगा, द प्रेफरेंस फॉर कॉफी विल इंक्रीज, प्रेफरेंस फॉर कॉफी विल इंक्रीज, और उससे क्या होगा, डिमांड फॉर कॉफी विल इंक्रीज. ये चेन ऑफ एनालिसिस आप इस्तेमाल करते हुए 2 नंबर लेंगे in the future. So here you're going to get 2 marks. You represented for the first reason. The second reason could be that the price of one of its substitutes could increase. So आपको ये पता होना चाहिए कि जब डिमांड इंक्रीज उस वक्त होती है जब उसके किसी ना किसी सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़े. So the demand is going to shift towards right or forward. Tea and coffee are considered substitutes. आपने यहाँ पे एक फैक्ट दिया, tea and coffee considered substitutes, especially in more Asian environments. अप्लाई किया. If tea prices start to rise, consumers may shift to coffee. Okay, cause यानी कि उसका substitute की price बढ़ रही है तो consumers may shift to coffee. लेकिन assumption दी साथ में, if they think it's a strong substitute and it is within the same price range, ये भी हो सकता है. This is the assumption. So मैंने analyze किया और साथ में assumption दी. Assumption क्या दी कि price टी की बढ़ेगी तो कॉफी पे उस वक्त फर्क पड़ेगा अगर लोग उनके दरमियान सब्स्टिट्यूट का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग समझेंगे. अगर उनके दरमियान सब्स्टिट्यूट का रिलेशनशिप वीक है तो प्राइस ऑफ टी बढ़ भी जाए तो कॉफी की डिमांड पे उतना असर नहीं पड़ेगा. तो इस एनालिसिस को कामयाब सक्सेसफुल होने के लिए शर्त क्या है, अजम्पशन क्या है कि उन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो. उन दोनों के दरमियान जो सब्स्टिट्यूशन का रिलेशनशिप है वो क्या हो, वो स्ट्रॉन्ग हो. ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है. और साथ में क्या, इट इज विद इन द सेम प्राइस रेंज, यानी कि लाइक टू लाइक सब्स्टिट्यूशन हो. द डिमांड फॉर कॉफी वुड राइज. तो मैंने सेकंड चीज क्या लिखी, मैंने लिखी प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर कॉफी वुड इंक्रीज. व्हाई? बिकॉज टी एंड कॉफी both are substitutes. Tea and coffee both are substitutes. यार, I'm recording. Can you please close the door? Tea and coffee are both substitutes.
राइट? टी एंड कॉफी आर बोथ सब्स्टिट्यूट्स। तो अब अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ेगी तो डिमांड फॉर कॉफी बढ़ जाएगी, क्योंकि टी को लोग छोड़कर कॉफी पे चले जाएंगे, राइट? तो इससे इससे क्या होगा? द डिमांड फॉर कॉफी विल इंक्रीज, डिमांड इंक्रीजेस। फर्दर एनालिसिस, और हमने अजम्पशन में क्या दिया? अजम्पशन में ये दिया है कि अगर उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग है तब। If you come to part B, however, you're talking about why the demand for coffee may not increase in the future. However, in the future, research may discover harmful effects. यानी कि अगर ये पता लगता है कि कॉफी के harmful effects हैं of drinking large amounts of coffee, so what will happen? This could be published in the newspaper and media. If consumers are health conscious, now you're giving an assumption कि अगर consumers health conscious हैं और वो अदर हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो क्या होगा? डिमांड फॉर कॉफी विल स्टार्ट टू फॉल। मोस्ट ऑफ यू व्हाट वुड डू इज, आप लिखेंगे कि कंज्यूमर्स को ये पता चल रहा है कि कॉफी इज हार्मफुल, सो द डिमांड फॉर कॉफी विल फॉल। ये क्या कि आप आगे बढ़ जाएंगे, फतवा दे देंगे? नहीं, आप एक्सप्लेन करेंगे, उसको अजम्पशन देंगे कि यार ये उस वक्त होगा अगर ये होगा, राइट? उस वक्त ये होगा अगर ये होगा। सो अगर, इफ, अजम्पशन ये देंगे, उसके बगैर एनालिसिस इनकम्प्लीट रहता है, डेवलप नहीं होता। सो द डिमांड फॉर कॉफी वुड स्टार्ट टू डिक्रीज इन द फ्यूचर, अगर जो है वो लोग कंज्यूमर्स हेल्थ कॉन्शियस है। हेल्थ कॉन्शियस नहीं है पाकिस्तान की तरह धड़ा धड़ पीते रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या फर्क पड़ेगा? एज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉफी इज अ नॉर्मल गुड। नाउ सेकंड रीजन आप दे रहे हैं, दिस इज, ये पहली रीजन खत्म हो गई, अब आप दूसरा रीजन दे रहे हैं ऑफ साइड बी। As in most parts of the world, coffee is a normal good. Normal good क्या होता है? जब जिसकी डिमांड बढ़ती है, जब लोगों की इनकम बढ़ती है। As in most parts of the world, coffee is a normal good. If the incomes of people fall during a recession, यानी कि if the incomes of people fall, कब होगा ये? Such as a recession, मैंने assumption दी है, in the future they would consume less amounts of coffee. As income decreases, the amount for normal goods decrease, therefore the demand for coffee would decrease. What have I done? I have explained the reason why would the demand would fall. सही है? तो रिसेशन एक वो एरिया होता है जहां के ऊपर वो पीरियड ऑफ इकोनॉमी होता है where the output is less than last year. अगर कंटिन्यूसली 6 months तक आपकी आउटपुट इज लेस, गिरती जा रही in a period of recession, this is usually when aggregate demand is falling, राइट? लोगों के पास उतनी इनकम नहीं है कि वो चीजें अफोर्ड कर सकें, therefore the amount डिमांड फॉर कॉफी वुड डिक्रीज। कॉफी एक क्वालिटी की चीज है, एक अच्छी चीज है, एक वैल्यूएबल चीज है। फॉर एग्जांपल, अगर उन कंट्रीज में जहां पे उसकी उसकी वैल्यू है, तो अगर लोगों की इनकम कम होगी तो वो उसकी डिमांड कम करेंगे। यहां तक टेक्निकली मुझे 8 नंबर मिल जाने चाहिए। फिर भी मैंने अपने क्वेश्चन को फुल प्रूफ करने के लिए ये रीजन बताई है कि कब हो सकता है डिमांड पर असर ना पड़े अगर उसकी डिमांड इन इलास्टिक है। और ये लास्ट में मैंने एक ओपिनियन दिया है, ये ए लेवल्स में रिक्वायर्ड होता है, ओ में रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन इट डजंट एवर हार्म योर आंसर बिकमिंग गुड। इफ यू आर थिंकिंग दैट यू कुड ऐड समथिंग टू योर आंसर एंड मेक इट मोर रिच, व्हाई नॉट? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? एक लाइन ही तो है। Whether the demand for coffee would rise in the future would also depend on its demand elasticities. If the price of coffee rises or falls, the demand for coffee may remain the same if it's inelastic. यानी कि हो सकता है कि जो है वो डिमांड आगे जाके ना बढ़े ना कम हो, अगर मैं उसकी प्राइस को ले लूं, और प्राइस अगर उसकी इनइलास्टिक है, डिमांड उसकी प्राइस इनइलास्टिक है, तो यानी कि उसकी प्राइस बढ़ने या कम होने से उसकी डिमांड पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सो ये जो क्वेश्चन है, डिस्कस वेदर और नॉट डिमांड फॉर कॉफी वुड लाइक इज लाइकली टू राइज इन द फ्यूचर, उसको आप आखिर में कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं। आई थिंक इट इज अ कंप्लीट आंसर एंड आई होप दिस हैज हेल्प्ड यू।